right? This for homework, like all these new things. So let's first cover what we have seen in terms of functions and methods. Okay, in terms of functions and methods, I hope my voice is clear, right? Everyone, you're getting my voice. Uh, yeah. So let's understand what we have learned yesterday and then continue with what we can. The very first thing that we have learned is functions, right? So functions क्या आता है? Functions are the block of code that only run when they are called. Yeah, that only run when they are called. It means so this is one of the block of code, right? ये code है, print hello world. Very simple code, right? We are just asking to print this particular. So what I have done is I have added the code in this thing. इसमें I have added this particular code. Yeah, the particular code I have added. So what it called is this is a constructor कह लो इसको है ना. So it starts like it defines. Okay, def as in defines a function. So you need to define a function and you can give any name to it. So my function or your function or function, right? And then you need to add this parenthesis, right? And these colon. Okay. Once that is done, you need to add whatever code you want to add, right? So we just copy pasted this part and we ran it. ठीक है, इसको run कर दिया था हमने. So let me just run this. If we run this, nothing's happened. Like nothing happens here. कुछ भी print हो नहीं रहा है. Right? Although even though we are saying कि print hello world, but the very first property is functions are the block of code that only runs when they are called. ठीक है. So this is a function name right now. ठीक है. हम ये function name है अभी के लिए. So we need to call it by its name, of course. So we said hey function name, right? Function name and these parentheses. Okay. So parentheses are used to add arguments in it. So we will learn about that today. So once I call this, we will get the whatever the code inside it. It runs there and we get the output. Okay. One more example is like string. Okay. So we have this function like for I in a range of 5. So ये for loop चला दिया हमने. So what happens is range 5 means it will run 5 times, right? It will run 5 times. And this I will get printed 5 times because this string is there. Like we are printing string. So this particular string got printed how many times? 5 times. So I took the same code. Yeah, I took the same code and simply added here. Yeah, simply added here. I have named a function my function. Okay. What I have done is def my function parenthesis. And then I call that function, I've got the output. You know, simple. Again, this one I've said a dictionary. I just want to return the dictionary or print the dictionary. Okay, so I've simply said I've defined a function that is get dictionary or get dic, right? Parenthesis colon, added a code. Okay, added a return like something I have to return. Right? Return as in print. We can use actually a return function here as well. If I add like this return this one, right? If I simply add like this, mm, we can say get function को बोला है और it returns whatever the value is. You can see the this one it is returning a this one. ठीक है. You can also say like this return a का वैल्यू रिटर्न कर दो. ठीक है, या सबका एडिशन कर दो. ठीक, dict 1 a plus b plus c. ठीक है, if I say this you will get 6. 1 plus 2 plus 3 as in 6. ठीक है,
This is how simple you can create. So earlier what we used to do, like you would go for like add all those things, but you can add like this also right now. Okay. So you can be very creative. You can be very creative. Okay. While going through it. Okay, I'm going through. So then this was the last example that I have given where I have created a function called addition. Okay. So there is like a equals to 10, b equals to 20, and I said c equals to a plus b and return c. Okay. When I call this particular addition function, I get a value of c as in 20. Then there was this subtraction, multiplication, division. Okay, subtraction, multiplication, division functions that I have given you, right? So let's create these things. For subtraction. So I have defined this. ठीक है, अभी ये थोड़ा कुछ नया लग रहा है. ठीक है, डेफ सब्सट्रैक्शन ए कॉमा बी, तो इसकी तो बात ही नहीं थी, राइट. ठीक है, इसकी वी हैव नॉट डिस्कस दिस बिफोर. ठीक है, although few students gave these completed this work like homework, and those were right, but let's discuss this. So now what I have done is I have said subtraction c is equals to a minus b, return c. Okay. So it will return c, and I have said a minus a comma b. Okay. So now I am calling this function. Okay. We need to call this function, right? Here also we have called this. But here the variables, right? These variables are defined inside a method. ठीक है, are defined inside a method. तो इनको हम क्या कहेंगे? These are called as local variable. ठीक है, these are called local variable because these variables are limited to this particular method only. ठीक है, limited to this, like we have seen this local variable and global variable. I will explain this in more depth if you forgot it. Okay. So now what I have done is सब्सट्रैक्शन को यहाँ पर ले लिया. नाउ आई विल पास सम वैल्यू 10,5. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस a विल बिकम 10, b विल बिकम 5 एंड a माइनस b, like 10 minus 5 will become 5. ठीक है, so if I do this I will get c, this c as a output as 5. ठीक है, ठीक है, तो ये 10 यहाँ पर जाएगा. ठीक है, एंड ये 5 यहाँ पर जाएगा, एंड देन इनका एडिशन हो जाएगा. ठीक है, लाइक इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, एंड वी विल गेट द आउटपुट एज सी लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस. तो सिंपल है, राइट. तो यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, बट वी कैन इवन पास सम वैल्यूज हियर आल्सो. ठीक है, वी कैन पास सम वैल्यूज हियर आल्सो. लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है, I have, let me create like sum of average. Okay, sum and average, that these two things I have said. So now I am saying a comma b comma c, a comma b comma c. Okay, so I'm saying this, and I'm saying this also. ठीक है, फर्स्ट क्या करते हैं? सम एवरेज नाम से आई हैव डिफाइंड अ मेथड. ठीक है, उसको मेथड कहना, फंक्शन कहना. ठीक है, देन आई सेड in the parenthesis a comma b comma c. ठीक है, I have taken a sum as a variable. ठीक है, sum as a variable equals to a plus b plus c. Then average is equals to summation, जो भी summation आने वाला है उसको divide by 3 कर दिया, and I am saying return this summation and average. ठीक है, if I run this, nothing will be there.
But now if I call this some average function, okay, and I'm passing a value of a as in 10, b as in 20, c as in 30. Yeah. If I run this, I will get summation as a summation. Okay. This summation like a plus b plus c, 10 plus 20, 30, 30 plus 30, 60, and average. So 60 जो हमारा आया है, 60 will be here, divide by 3 is 20. ठीक है, 20. So what we have learned till now is first, तो ये है, ठीक है, तो दिस इज तो सिंपल है, ठीक है. इसमें क्या है कि you can define a function, you can define a function, you can add whatever your code is, okay, you can return whatever the code output is, okay. You either specify return or you either specify this print, okay, or there are few more things like yield is also there, so वो भी सीख सकते हैं, ठीक है. Yield, this yield is also there, it will return the value of, okay. These three things are print, print, comma, return, comma, or yield, ठीक है. So print will only print whatever the value, return is like almost similar thing they do, okay. Almost similar thing they do in industry, mostly like 90% people use a return, okay. Return. So we have created a function and return that we want some value to be returned, okay. So this is the first thing that we have learned, right? कि कुछ ऐसे code you just have to add here. The second thing that we have learned just now is we can pass some values here, ठीक है. इनको कहा जाएगा arguments, ठीक है. these are arguments these are arguments, ठीक है. So you can pass those arguments while calling a function, ठीक है. जब भी कॉल करोगे तब यहाँ पर you can add those values. But here the thing is, like if you pass only two variables, you can only pass two values, okay. Or you cannot like अगर, let me just take one more example. Hmm. So just making this example, like, okay. So if there are these three values, and if I don't pass one value, okay, if I just only pass two values, yeah, if I call this, it will throw some error because there is one missing argument. Like, one missing argument is required, that is C. तो C का value you आपने डाला नहीं, that it is saying, ठीक है, right, that it is saying. But what if I add 40 also, like one more value also, okay, one more number. So it will say it takes only three positional arguments, but four were given. It takes only three arguments, but four were given, right? तो इसको एक एग्जांपल रखते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसको, yeah, yeah. Are you guys getting this? Are you guys getting this? If you are getting this, type yes in the comments, guys. Slightly interesting the Python have become now. Yeah, slightly interesting the Python have become because till now we were learning all these things. कि भाई, है ना, why like defining a variable, then adding the variables, right, then doing summations or average and printing those things. But now we, at that time we were not very much clear about about whether, like, why we are learning this, right? But now you can see we can create some useful functions, right? Some useful functions. For example, mm, this one, okay, this one. So let's take multiplication.
Def multiplication a comma b, ठीक है, and I am multiplication of 10, ठीक है. So इसमें what is happening? I have defined a function that is multiplication. A comma b is the variable. So whenever I call this, I need to add two values. Okay, A का value, B का value. And I'm saying C is equals to A into B, right? It is returning C. Okay, it is returning C. So what happens now is, so if I make one another function multiplication of A comma B, and I say this, and if I say multiplication of multiplication 1, okay, so now this is considering this particular particular function, ठीक है. तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई इफ यू कैन अंडरस्टैंड. मल्टीप्लीकेशन ए कॉमा बी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टू ए कॉमा बी. तो यहाँ पर क्या होगा? So these functions are reusable. You can call this function in another function also, right? तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक का वैल्यू यहाँ पर जाएगा 10, ये 20 यहाँ पे जाएगा, फिर से ये 10 यहाँ पर भी जाएगा, 20 यहाँ पर भी जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर आएगा 200, ठीक है, और ये इनका आंसर भी आएगा 200, राइट, 200, एंड इसका आंसर आना चाहिए 40,000, ठीक है. लेट्स सी इफ 40,000 आता है, इफ आई एम रॉन्ग. So see 40,000 answer is. So this is how useful these things are. Yeah, this is how useful these things are. So we were learning few functions like right, frozen set or subset, super subset or intersection, right? So इनका behind का working also we have learned. ठीक है, एक zip मैंने समझाया था. If you remember, I am not sure. It was in the dictionary, right? So in the zip function, mm, mm, zip. So in the zip function, they will say return this dictionary. Okay. So now this is a one function. Okay. This is one function. So whenever you call this a zip function, whenever you call this, you'll get this output. And you'll get this output. Okay. So this you can pass these things as argument. अगर मैं ये दो चीजों को बाहर ले लूँ, I'm copying this and commenting out and passing as an argument marks comma names, marks comma name. Marks equals to marks, names equals to names. Okay. So now what happened? This mark will go here, names will go here, and it will return the output that we want. Or is this argument unexpected argument as mark? So actually it is referring to this one actually, but this here also it is taking. No? But anyway, people create functions like this. Okay? People create functions like this. Marker, this goes here. So whatever Python functions are there, right? Even range or like whatever functions that we have learned till now, whatever function that we have learned till now are are either like they have created like this. Okay, they have used like def. Okay, all those things. Okay, this was it. Okay, this was the problem because we have not ran it. Okay, this was the problem. See, this goes here and this goes here. Okay, and we get the output. We get the output.
Alright, so uh, it means that you can create your own functions. You can create your own functions, whatever the need is. Okay, whatever the need you have. Okay, so someone created this function और वो फिर उसके नाम से रजिस्टर हो गया है ना, वो फिर उसके नाम से रजिस्टर हो गया. अभी now you can also select with name and mark. Already always we are passing like this with name and mark, and it is in the background. This code is working. Okay? This code is working, but they have created like they have made our life very easy. You just need two things, and you are just saying zip name and mark, and it is giving the result. But at the back, this method was there. Okay? This method was there. So let's understand few things about global variable, local variable, और how we can define a variable. ठीक है, तो मैं इसको फिर से लेता हूँ इस एग्जाम्पल. So you can even say x comma y comma z equals to 10 comma 3, and you can say like this. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, what I have done here. So there is a function def नाम से I have created a function, and इससे नहीं, def is used for defining a function. Okay. Then I have used this word keyword, that is sum average, as the name of the function. I've added past three arguments. Then I wrote a code जहाँ पर मैंने कहा कि summation of all these three things. Then I have said कि average कर दो, जो भी summation आएगा, मतलब summation divide by 3 अगर कर दिया तो I will get average, and return summation and average. ठीक है, return summation and average. So now एक नया step I have added. ठीक है, तो summation of x y z मैंने कह दिया. ठीक है, summation of x y z मैंने कह दिया. ठीक है, तो इसमें इसमें क्या कर दिया, x y z हो या a b c हो. ठीक है, it catches the name. ठीक है, not necessary you need to mention the a b c. x y z भी चल जाता है. ठीक है, x y z भी चल जाता है, but I have passed the xyz का value separately. xyz equals to 10 20 30, so it works. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी, एंड देन ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो इफ आई रन दिस आई विल गेट एन आउटपुट. ठीक है, 60 एंड 20, 60 एज इन समेशन, 20 एज इन एवरेज. ठीक है, बट you cannot mention these values here. ठीक है, इसके बाद नहीं मेंशन करना चाहिए, लाइक करना नहीं चाहिए. क्या होगा सबसे पहले. ठीक है, दिस कोड रन्स लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलिंग होगा, देन इट विल गो टू हियर, लाइक एट एक्चुअल में लाइन बाय लाइन ही चलेगा. तो फर्स्ट ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बट देयर इज नो वैल्यू, राइट. तो आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं इसको अलग से भी लिख दूं. ठीक है, write this with अलग से, if I run this, nothing will happen because it is not returning anything, right? It is not returning anything. So once I run this one, ठीक है, so it will get an signal कि इसको रन करना है फिर से. ठीक है, इसको रन करना है फिर से. So what will happen, this will get run, but ये values इसमें ऐड हो जाएगी, x y z, ये फिर ये. But the condition here is this line is coming, वो बहुत बाद में आ रही है, राइट. दिस इज कमिंग बहुत बहुत बाद में, क्योंकि ये पहले कॉल हो जाएगा. तो यू कैन नॉट मेंशन अ वेरिएबल आफ्टर दिस कॉलिंग. यू नीड टू मेंशन, दिस विल गिव अस, this should give us an basically nothing is happening. x y z जा रहा है वहाँ पर, and the values are not coming here. ठीक है,
the values are not coming here. It should have thrown some error actually. So we can say something like this also. Addition from average average is equals to this. Okay. Anyways, it is not returning the values, these values that we are expecting, but see, here we got some answer because these values got added in here. X came here, Y came here, Z came here. Okay, Z came here. But now when we run this particular code, ये जब code run होगा तो ये x यहाँ पर चलेगा, y यहाँ पर चले जाएगा, z यहाँ पर चले जाएगा. But these values are coming later, right? इस step के बाद है. So these values are not getting added. ठीक है? These values not getting added. So let me write one more thing. इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ. सिंपल कर देता हूँ. एक ये सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. Def simple and just ठीक है, ए कॉमा भी कर देते हैं. ठीक है, जस्ट एडिशन. ठीक है, जस्ट एडिशन. तो उसमें सिंपल क्यों नहीं, सिंपल. तो आई एम सेइंग ए कॉमा बी इक्वल्स टू 10 कॉमा 20. ठीक है, 10 कॉमा 20. इसको मैं आई जे भी कुछ भी ले सकता हूँ. ठीक है, आई कॉमा जे. ठीक है, बट आई हैव टू मेंशन द आई जे वैल्यू. आई जे. ठीक है, आई कैन टेक एनीथिंग. तो व्हाट विल हैपन हियर, ये आई जे का वैल्यू इसमें ऐड होगा. ठीक है, एंड देन दिस विल गेट गो हियर, रन करेगा एंड हमें आउटपुट सी मिल जाएगा. ठीक है, आउटपुट सी मिल जाएगा एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ सी. ठीक है, बट what if what if instead of writing it here I write ij का वैल्यू यहाँ पर. ठीक है, ij का वैल्यू यहाँ पर. So what will happen? ठीक है, what will happen? So this is a function. ठीक है, लाइन बाय लाइन सोचो लोग कैसे वर्क करेगा. सबसे पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, यहाँ पर तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, फिर ये चलेगा. ठीक है, जिसमें ये वैल्यूज विल गेट. अरे यार, तो मेरा हैंडराइटिंग का क्या है? तो इसका अंदर कर देता हूँ. फिर ये चलेगा, जैसे ये चला तो फिर से ये वैल्यूज ऐड होगी यहाँ पर एंड अगेन इट विल रन, जिसमें आई जे का वैल्यू यहाँ पर आ गया. आई एन जे का वैल्यू तो यहाँ पर 1020 आएगा, फिर से 1020 आएगा, आउटपुट विल बी सी. ठीक है, आउटपुट विल बी सी. If I run this, I will get output. So it means you can define the variables inside this function calling also, or you can define the variables outside or before the function also, or before calling also, like this one. Yeah, like this one. But in a simple case, but you should not define this just after this one. ठीक है, अगर ये करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा. ठीक है, अगर ये करोगे तो आउटपुट ही नहीं आएगा. So this is the only thing that we need to remember while specifying while specifying the variable. ठीक है, while specifying the variable. ठीक है, so one simple question I would like you to solve right now so that I will get the understanding. So I am saying def. I am saying defining the function. So define करा जाए. Hmm, hmm, define only average. ठीक है, एवरेज नाम से आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन. एवरेज 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 ऑफ
Not like this. Average of वन डी भी है, ठीक है, डी भी है, and I am directly saying a plus b plus c plus d divide by 4, ठीक है, divide by 4 and return average, ठीक है, सिंपल फंक्शन है, ठीक है, सिंपल फंक्शन। तो नाउ इस फंक्शन को कॉल करो गाइस, कॉल दिस फंक्शन so that you will get some output, ठीक है, call the function, put the variable and tell me what the output is, ठीक है, tell me what the output is, tell me what the output is। क्या करना है, you need to call the function, इस फंक्शन को कॉल करना है एवरेज नाम से, you need to put some values, जो भी तुम वैल्यूज पुट करोगे उसका ही रिटर्न वैल्यू क्या आएगा वो भी डालना, ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू डालना, रिटर्न वैल्यू डालना। सुहास से एवरेज कॉल कर दिया, देन यू हैव एडेड ऑल दीज नंबर, तो इसमें चार पैरामीटर्स ऐड करने हैं, ए बी सी डी, 10 20 ये हो गया 30 60 100, 100 डिवाइड बाई 4 is 25, so this is the right answer, this is the right answer। some more anyone like, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये, कि इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है, और उसमें चार वेरिएबल्स ऐड कर दिए, वाई फोर बिकॉज मुझे मेरे जो कोड था अंदर का उधर चार वेरिएबल चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं पास करूंगा, ठीक है, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, a equals to 10, c equals to 30 and d equals to 40, ठीक है, सेम। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चारों वैल्यूज नाउ विल गेट एडेड हियर, डिवाइड बाय 4 एंड आई विल गेट द एवरेज, ठीक है, एज 70। is it right, right? 30 30 60 divide plus 100 divided by 4, 70, mathematically correct, not right, right? 30 30 40 40 divided by 4, why we are getting this 70? Anyways, okay, so what happening is here, right? This is wrong, this was the mistake, okay? So now we will get 25, okay? So basically the divide by 4 was for only for d, okay? D by 4 means this will be 10 and this will get added, ready? So now this is 25, okay? So this the same similar thing is this one where we are passing the arguments in the, कोई और लिखा है क्या, 555 average is 20 by 4, that is 5, this is also right। Rashik says
A, B, C, D, then calling this. This is also right. The output is 3, 6, 10, 10 by 4 is 2.5. Okay. The output is 2.5. So this is also right. Yeah, the output is 2.5. This is also right, 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 and right. Okay. So it means you are getting this. Okay. It means you are getting this. So simple hai. If I if I mention let's say I equal to equals to this and this, if I call it, I will get again that particular issue. So there was a issue in the code. Okay. So I will get this 20. Right. Okay. Simple hai. So I was telling here, coming back to here. So we have seen, right? So you can specify the values here. These values get considered here, and now the function will run. You cannot write like this, ठीक है? जब कॉलिंग के बाद में if you add values, इसमें सेंस ही नहीं करता, right? क्योंकि सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा. कॉल में तो कुछ वैल्यू नहीं है. जब कॉल करोगे उसमें कोई है ही नहीं. बाद में फिर ये वैल्यूज डिफाइन करके मतलब नहीं. You can also uh, yes. So what will happen here? What will happen here? So if I run this, I will get nothing. Okay. So the thing is, you need to call a function once after you define a function. Okay. So this is also something which is not right. ठीक है. क्योंकि क्या होगा when we run this, तो ये पास्ट में चेक करेगा कि कहीं पे मैंने ये फंक्शन, ऑल्दो यहाँ पर है तो फंक्शन, हाँ अच्छा दैट इज वाई इट कुड हैव, देखिए अलग फंक्शन डिफाइन करता हूँ. ठीक है. सिंपल वन, सिंपल वन. If I run this, I will get an error because simple one is not defined. It was referring to this previous function. Yeah. Here also, I think I should call simple to simple two. ठीक है. तो ये तो आउटपुट आ जाएगा, but this output, this this is not good. और एक सिंपल रहेगा आगे. Simple C, simple C. Now this should give us an error. It is not given anyway. So what all things you cannot do? The very first thing is, तो ये आपको डिफाइन करना है फंक्शन. ठीक है. डिफाइन अ फंक्शन, देन यू कैन कॉल अ फंक्शन. ठीक है. कॉल अ फंक्शन, यहाँ पे कोड रहेगा. ठीक है. यहाँ पर रहेगा कोड. ठीक है. यहाँ पर रहेगा. बिल्कुल ही अनमैच हो गया. यहाँ पर रहेगा डेफ फंक्शन. Anyways, let me just write like this. What all things can be there? Def फंक्शन रहेगा. ये फंक्शन का नाम डाल दो. ठीक है. यहाँ पर कोड रहेगा, कुछ भी कोड डाल दो, या फिर ये वैल्यूज यू कैन पास इट हियर. मतलब मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू. ठीक है. वैल्यूज यू कैन पास इट हियर. और जब भी तुम कॉल करोगे, whenever you would call function, it has to be like this. Okay. It has to be like this. या फिर जो भी variables that you have passed here, जो भी variables that you have passed here, you need to like pass here. You need to pass either inside a function directly or just below, और इसके बाहर भी चल जाए. ठीक है. So when you pass variables like this, okay, A comma B comma C comma D. J K L.
देखिए, so what is happening here is ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी एंड दिस वैल्यूज विल गेट रेफर्ड हियर. ठीक है, गेट विल गेट रेफर्ड हियर एंड हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा. दैट इज दी अगेन 2.5. ठीक है, 2.5. So this is called as global variable. Yeah, this is called as global variable. Global variable. Why? Because this is outside function. These variables are outside function. These variables are outside function. So if I even call them out, like if I simply say I का value बता तो it will give me 10. So this is called as global variable. ठीक है. But what if I just don't write this I J K only and instead of D I say D is equals to 0 here or D is equals to 40 डाल देता हूँ. D is equals to 40. If I run this I will still get output, right? Because I J K और A B C D यहाँ पर रेफर हो जाएगा तीन, ये तीन चीजें आ गई एंड D मैंने अंदर डाला है इनसाइड अ फंक्शन. So this is called as local variable. ठीक है, this is called as local variable and if I ask this it will give me an error. ये D define ही नहीं बोल रहा है. क्यों? बिकॉज दिस डी हैज अ स्कोप और वो स्कोप क्या है? द स्कोप इज ओनली अ फंक्शन. इतने तक ही इस डी की सीमित है. डी इज नो लिमिटेड टू ओनली दिस फंक्शन. ठीक है, तो ये डी इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ये बाउंड्री के अंदर ही यूज होगा. ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज डी आउटसाइड. ठीक है, यू कैन नॉट यूज डी आउटसाइड. So this is called as local variable and this is called as global variable. Okay, this is called as local variable and global variable. So getting this, we very start like very initially we have learned this local variable, global variable. If I have to tell you very initially, I think we have learned this. This one, if you remember, local variable, global variable. ठीक है, यहाँ पर भी you see एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा डेफ इक्वल्स टू फंक्शन 1 वेरिएबल 2. ठीक है, और आई एम रिटर्निंग द फंक्शन 1. ठीक है, जिसमें वेरिएबल 1 जो है वो ग्लोबल है, ये इसके पहले लिखा है फंक्शन के पहले और आउटसाइड ऑफ फंक्शन. एंड जो लोकल वेरिएबल है वो इनसाइड अ फंक्शन. तो इफ आई आस्क वेरिएबल 2 इट विल गिव मी एन एरर बिकॉज द वेरिएबल 2 इज ओनली लिमिटेड टू दिस what this function, this function. And if I ask for variable 1 anywhere to this variable, I got value as 800. So this is called as global variable. So whichever function, let me just pick this definition here. What it says, global variable defines outside a function and has a scope to entire notebook. Local variable are defined inside a function and has a scope to particular method only. ठीक है, मेथड हो गया फंक्शनल. ठीक है, मेथड और फंक्शनल. So I hope this is clear. Right? This is clear or not? If this is clear, type yes in the comment box. Type yes in the. If this is clear, I will give you one example to complete. And if this is not clear, you can ask questions. कि हाँ यार ये नहीं समझ में आ रहा, रिपीट कर दो. कुछ और एग्जांपल दे दो, ये एवरेज समीशन से बोर हो गए. You can say something like that also. Yes or no? Yes or no? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? One more example. हाँ, एग्जाम्पल आएगा और आएगा.
ठीक है, लेट्स गो हियर, कुछ और एग्जांपल करते हैं। डेफ गेट get what we can say smallest smallest number okay a comma b comma c ये थोड़ा सा एक मैंने कोड लिख दिया है यहाँ पर ठीक है ए बी सी एंड नाउ आई एम राइटिंग a is equals to 10 b is equals to 20 c is equals to this and get smallest number ठीक है I'm calling this function as abc okay. So what will happen whatever the values you add जिसमें से smallest number ये दे देगा ठीक है smallest number ये दे देगा that is 10 सिंपल है so now this is a like a function ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो तुम ठीक है कहीं पे भी यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल अभी यू हैव दिस लाइक ये वही हो गया ना गेट स्मॉलेस्ट नंबर और आप ऐड कर दो कोई भी नंबर इसमें ये वन कर दो इसको तो यू विल गेट आंसर एज वन कहीं पे भी यू कैन यूज दिस इन योर कोड ठीक है तो ये क्या है इसका यहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं एंड दिस इज एलिफ ऑल्सो तो अगर ए बी से छोटा है एंड ए सी से छोटा है तो रिटर्न ए एंड वो इफ एन एल्स स्टेटमेंट ठीक है हमने ये सीखा है ओके so if you ask value as 10 sorry a का वैल्यू पूछोगे तो you will get an answer as 10 you will get an answer as 10 कहीं पे भी पूछ लो अभी ये वैल्यू because this value has been registered equals to 10 so that is why it is called as global variable ठीक है global variable but what if I don't similarly को कॉपी कर लेता हूँ what if I don't I have one value का नाम है c और वो है ही नहीं मुझे पास ही नहीं करनी है उसको ठीक है आई विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ सी हियर ठीक है आई विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ सी हियर जो मेरे मेथड के अंदर है ठीक है या मेरे फंक्शन के अंदर है तो दिस इज अ फंक्शन ठीक है इतना ये फंक्शन हो गया एंड दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग ठीक है दिस इज फंक्शन कॉलिंग एंड यहाँ पर हमने बस वेरिएबल डिफाइन करे हैं जो भी वेरिएबल लगने वाले हैं फॉर व्हाट फॉर कॉलिंग अ फंक्शन फॉर कॉलिंग अ फंक्शन ठीक है सो नाउ इफ आई सी दो फंक्शन यहाँ पर दो वेरिएबल चाहिए थे दो वेरिएबल हम प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है थर्ड वेरिएबल इज इनसाइड अ फंक्शन एंड दैट इज बीइंग यूज्ड हियर nicely so if I run this I will get the smallest number as 3 3 because 3 is the smallest number among 10 20 and 30 right but if I simply ask for a I will get 10 but if I ask for c I will get yeah, yeah. इसको मैं कनेक्ट आउट कर देता हूँ ठीक है ये यहाँ से 3 उठा रहा है ठीक है यहाँ से 30 उठा रहा है you can see 3 again 30 so now if I run this again and now if I ask स्टोर हो गया यार ये कहीं पे दिस इज अगेन इट इज एक काम करता हूँ इसको मैं रेड कर देता हूँ रेड रेड एंड रेड so you can see once you define any variable in the code ठीक है वो कहीं से भी उठा सकते हैं because those are called as global variable ठीक है global variable so now z is a local variable which is inside a function ठीक है now if I ask कहाँ से उठा रहा है 30 कहाँ से उठा रहा है ये तो स्टोर हो गया z should not be stored see, it is taking 30 from somewhere it is taking 30 from a code but the more or less my
सेइंग इज कि दिस इज ए लोकल वेरिएबल जो हमारे इसके अंदर डिफाइन करा गया है, लोकल वेरिएबल। यू कैन नॉट रियली गेट इट। लेट मी जस्ट रीस्टार्ट दिस, ठीक है, तब शायद ना आए वो। जस्ट रीस्टार्टिंग, क्योंकि एक बार उसने वैल्यू कैच कर लिया तो वो स्टोर हो जाता है। So this is this, and now if I ask, right, so abhi it will give us error, right? Because this is inside a function. Okay, that is why it is called as local variable. Okay, local variable. So what if I want to make what if I want to make a local variable as a variable global variable? क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे ये इसका वैल्यू भी एज इन पता कर सकूं, ठीक है। अगर मैं इसको चला दूं, आई विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर एज 3, राइट, 10 20 30, and if I ask for a, I will get a. If I ask for z, I will not get z because z is inside a method, ठीक है, inside this whatever the function. But what if I want to make this a global variable, ठीक है? What if I want to make this a global variable? So what you have to say is global z, ठीक है, global z कर दिया है, ठीक है। Now if I run this, I will still get output as 3। ये तो हमें आ ही रहा था, z अभी 3 आ जाएगा, ठीक है, z अभी 3 आ जाएगा। So now you can use this z का वैल्यू कहीं और भी, ठीक है, कहीं और भी। So are you getting this one? Let's you guys try something, ठीक है, you guys try something or just give me whatever the answer we should get, ठीक है, क्या आंसर आएगा हमें, ठीक है, क्या आंसर आएगा। So I'm defining a function, defining, let's say again sum average में I'm not really passing any variable, ठीक है, not passing any variable। और यहाँ पर I'm saying यहाँ पर I am saying let's say g is equals to 10, okay, g is equals to 10 and summation is equals to or average is equals to g divide by 2 and written average, ठीक है, इतना ही कह रहा हूँ, इतना ही कह रहा हूँ। So now इसको क्या करो आप, your task is to call a function, call a function, make g as a global variable, ठीक है, make g as a global variable। these are your tasks, ठीक है, सिंपल है, these are your tasks, ठीक है? और इसको मैं और थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ, ठीक है। So here I will pass 1 a comma b, you start writing, ठीक है, you start doing, जहाँ पर I will say c is equals to a plus b plus c and I am saying a plus b plus g कर देता हूँ and I am saying c is equals to a divided by 3, ठीक है। हाँ, अभी दिस इज योर लाइक, वो इसको इधर इसको करो या इसको करो, ठीक है, दिस इज समवॉट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका क्या करना है, यू नीड टू डू द फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, एंड इसका जो जी है, जो अभी के लिए
ये भी बता दो कि हाउ विच आर दी ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स इन द कोड। ठीक है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। लिस्ट करना है कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है कौन सा लोकल वेरिएबल। ठीक है। दीज आर थ्री क्वेश्चन, राइट? दीज आर थ्री क्वेश्चन। फर्स्ट इज यू नीड टू कॉल अ फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करना। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज make g as a global variable। ठीक है। make g as a global variable, if g। and the third question is which are the global variables and which are the local variables। ठीक है। which are the local variables, which are the global variables। try to think in a way, सिंपल सिंपल स्टेप्स में अगर आप तोड़ोगे। ठीक है। तो these are two variables are required। ठीक है। तो कॉलिंग दैट आई कॉल क्या करना है, इसको लिख दो। और कॉलिंग में ये दो आर्ग्यूमेंट्स आई नीड टू पास। देन this will do its work। I need to make a g as a global variable। Okay, so I need to use some function to make it a global, right? And the third is I need to say which is a global variable and which is a local variable। Okay, so I will write like this: so global equals to this, local equals to this. So Prashik says I put in global g. So which are the global variables and which are the local variables? Which are the global variables and which are the local variables? This last question का answer। Which are the local variables? Which are the global variables? Locals are A and B. B, no, this is entirely opposite। So, so basically, the first thing is call a function। ठीक है। So I will say sum average equals to 10 comma 20। ठीक है। 10 comma 20। तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इफ आई रन दिस आई विल गेट सम आउटपुट। ठीक है। तो क्या रहेगा, ये तीनों का समेशन हो गया 10 20 30। ठीक है। 10 10 20 कितना हो गया 40। 40 डिवाइड बाई 3 इज 13.333। ठीक है। नाउ आई नीड टू मेक a g एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। आई नीड टू मेक a g एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ग्लोबल इक्वल्स टू g। तो ये ग्लोबल हो गया। ठीक है। ये ग्लोबल हो गया। नाउ आई नीड वांट टू लिस्ट विच आर ग्लोबल। अभी के लिए तो तीनों के तीनों ग्लोबल वेरिएबल है। तीनों के तीनों ग्लोबल वेरिएबल है बिकॉज एक तो ये 10 एंड 20 आर ए एंड बी, राइट? तो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, दिस इज ए कॉमा बी। ठीक है। दिस इज ए कॉमा बी। तो ये भी ग्लोबल है। ग्लोबल एज इन ये कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ दिस g इज ए लोकल वेरिएबल। ठीक है। अभी के लिए इस फंक्शन के लिए, ऊपर वाले फंक्शन के लिए दिस इज ए लोकल वेरिएबल, बट वी मेड इट अ ग्लोबल हियर। यहाँ पर ग्लोबल, ग्लोबल का क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, लाइक दिस इज अर्थ। ठीक है। दिस इज इंडिया। ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं है लेकिन अर्थ, अर्थ ऐसा भी नहीं है। तो दिस हम कहते हैं ना कि ग्लोबली फेमस। ग्लोबली फेमस मीन्स ये एक, इट हैज अ स्कोप इनटू एंटायर वर्ल्ड। और वो होता है ना कि तुम यार, तुम तो यहाँ के लोकल रहते हो, है ना, लोकल प्लेयर हो,
ना एक ग्लोबल प्लेयर होता है, इंटरनेशनल प्लेयर, विराट कोहली इंटरनेशनल प्लेयर। हाँ, कुछ लोकल होते हैं, लाइक कि तुम लोकली खेलते हो, तुम्हारे छोटे से एरिया के लिए खेलते हो, यू आर कॉल्ड एज लोकल एरिया। द स्कोप ऑफ योर प्लेइंग इज still here only, ठीक है, still here only is called as local area, so it was a local। लेकिन कोई लोकल होता है, उसको हमको ग्लोबल बनाना है, तो यू कैन मेक देम ग्लोबल यूजिंग ग्लोबल इक्वल्स टू अदर थिंग। तो कोई प्लेयर होता है, उसको बस बाहर लेके जाना है, you can use this function global equals to global local। why this is very important? Because you need to understand the scope of them, ठीक है, so that is why global and local is important। so किसी लोकल को you can make a global scope, as in तुम कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हो, like अभी if I ask for जी, हम सोच नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसको ग्लोबल तो कर दिया। उसके बाद anyway, तो मैं फिर से आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट इसको देखना पड़ेगा, फिर से रीस्टार्ट करो, वो सारी चीजें रहेगी। so the first thing is how to call it, ठीक है, call a function, so you can call like this, you can define this outside a function। ये outside हो गया, राइट, outside हो गया मतलब ये global हो गया, you can call a function। so the second task was make a g as a local, sorry global, so ये इसको इस command से you can make it a global। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स है, तो एज ऑफ नाउ तीनों भी ग्लोबल है, ठीक है। इनिशियली जी वाज लोकल, लेकिन हमने इसको ग्लोबल में चेंज कर दिया, ठीक है, ग्लोबल में चेंज कर दिया। तो दिस इज हाउ इट इज, आई थिंक वी आर ओवर टाइम, तो लेट मी जस्ट अभी कल ही रिवाइज कर दूंगा मैं आपको ये सब, ठीक है, कल ही रिवाइज करूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो if I have to give you some homework, ठीक है, तो इसको क्लास के ग्रुप में ऐड कर देना, ठीक है। तो होमवर्क इज राइट ए प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन फॉर होमवर्क, राइट ए फंक्शन फॉर राइट ए फंक्शन फॉर किसके लिए, फाइंड ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर। और इसमें यूज करना कि स्क्वायर कैसे करा जाता है, ऐसे लाइक एक्स टू दी पावर टू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसमें ट्राई करना कि फंक्शन कॉलिंग में आर्ग्यूमेंट्स पास करना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। एंड एक क्यूब क्यूब भी निकाल दो, ठीक है, क्यूब वाला ये ट्राई टू थिंक कि ये कैसे कर सकते हैं, ट्राई टू थिंक ये कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, लाइक ठीक है, लेवल अप कर रहा हूँ मैं गेम को, ठीक है, लेवल अप कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि आई विल डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन जिसमें आई विल पास सम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये मत पास कर देना डायरेक्टली ऐसा, यू कैन डू दैट बाय द वे, ठीक है। उसके बाद आई विल राइट अ कोड, तो दिस विल समथिंग कोड लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एनीवेज, ट्राई टू थिंक योरसेल्फ, ट्राई टू थिंक योरसेल्फ एंड देन यू नीड टू डू द फंक्शन कॉलिंग, और कुछ आउटपुट आएगा, फिर वो फंक्शन ऐसा रहेगा कि उसको यूज करके यू कैन गेट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, square and cube of any number, ठीक है। so this is a homework for you guys, so
See you tomorrow. I hope you've got the concept. Like if there is any question, you can drop me in the comments or in the group also, and uh, try to complete the homework. Try to think कि कैसे क्या होगा यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ. Break down this task. ठीक है. And if you got everything from today's class, drop type win in the comments. And if you have any questions, so open your mic or type in the type in the comment box so that we can discuss. If you have any questions, type or raise your hand, we can discuss. Or if you got the today's lecture, type win in the comments. Type win in the comments. Win, win, win. Some more win. Cool. Some more wins. All right.